Are you failing your interviews or getting nervous about them as the date comes near? You think you are technically strong, लेकिन ये इंटरव्यूज क्लियर क्यों नहीं होते? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है and this is my attempt to share the experiences and the lessons I have learned the hard way, hoping that it will help some of you to accelerate your careers. पिछले कुछ सालों में मैं बहुत सारे इंटरव्यूज का हिस्सा रहा हूँ, both as an candidate and as an interviewer. एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कैंडिडेट्स में देखी है is that they get nervous before the interview, which really gives not so good impression. ये एक्सपेक्टेड होता है इंटरव्यू को, सो दिस इज़ नॉट एज बैड एज यू थिंक, लेकिन यू वुड वॉन्ट योर सेल्फ टू बी एट योर बेस्ट. इसकी एक वजह तो इंटरव्यूअर खुद भी हो सकते हैं कि दे आइदर आर नॉट वेरी फ्रेंडली और वेरी इंटिमिडेटिंग, लेकिन इसका ज़्यादातर ताल्लुक हमारे माइंड से और हमारे माइंड फ्रेम से होता है. एंड दिस कैन बी ईजीली फिक्स्ड बाय रीफ्रेमिंग योर माइंड टू अलाउ योर सेल्फ टू थिंक दैट इट इज़ अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स. ये एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है आपके और आपके इंटरव्यूअर के दरमियान, आपको जानने के लिए और देखने के लिए कि इफ़ यू आर really a right fit for the company, also for you to understand if the company is right fit for you. इसको इस तरीके से सोचें कि अगर आपको किसी फंक्शन में या किसी शादी की तकरीब में एक एग्जीक्यूटिव मिलता है और आपसे एग्जैक्टली सेम सवाल पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, टेल मी समथिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द जॉब दैट यू लाइक मोस्ट. क्योंकि आपको ये पता होगा कि उस वक्त आप एक इंटरव्यू के माहौल में नहीं है, तो यू विल बी मोर रिलैक्स्ड एंड मोर काम एंड यू विल बी वेरी नेचुरल इन गिविंग आंसर्स. That is reframing your mind. So when you internalize the fact that it is a very casual conversation, things become easier. ये एक human tendency है कि जब भी हम किसी एक unknown, unfamiliar environment में जाएंगे तो हम uncomfortable और nervous feel करेंगे. And the best way to overcome is to get familiar with the environment. Interviews में ये सिर्फ एक तरीके से अचीव हो सकता है, which is to arrive 10 to 15 minutes early at the venue. जब आप वहाँ जाएंगे 10-15 मिनट बैठेंगे तो आपकी बॉडी खुद ही उस environment में अडेप्ट हो जाएगी. And you will feel much more calm and relaxed when giving the answers. Although this is a very small tip, लेकिन ये टिप बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स भी इस्तेमाल करते हैं कि जब भी उनका कोई मेजर इवेंट होता है वो जाते हैं वहाँ पे वेन्यू पे, स्टेज पे, और जाके अपने आप को उस एनवायरनमेंट से फेमिलियराइज करते हैं to make sure that on the event they are more relaxed, more familiar and comfortable. So arriving at the venue just a little earlier will help you a lot. Second most important thing is to never give one line and one word answers. ये चीज़ मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करी है क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई एम नॉट एज टॉकेटिव एज एक्सट्रोवर्ट्स. इस पे रिसेंटली पॉल ग्राहम, द फाउंडर ऑफ Y Combinator, tweeted something like, if you are socially awkward, people will mistakenly think you dislike them and that will make them actually dislike you. What you need to understand is that interviewer is not always looking for exact answers. What they are looking for is your problem solving, your personality and your experiences. Until and unless it's a technical interview. So for example, majority of the interviews start with tell me something about yourself. अब इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि I am Mohammed Danish and I am currently working as a full stack engineer in Wave Financial. लेकिन this is just not interesting. How I would usually answer this question is, so I started programming in grade 9 out of a fear that I might fail my computer exams in my O-levels, which led me to get an admission in Computer Institute during my summers, where I learned languages like C and Visual Basic. That's when I decided that I would choose computer science as my discipline. I graduated in 2014 and since then I've been part of multiple companies. और इसी तरीके से फिर मैं 1-2 मिनट तक कंटिन्यू करूँगा. But you see the difference that one-liner and just a little bit more about yourself makes a difference. So adding just a little bit of meaningful information in your answers will make you more interesting. It helps the interviewer to ask more questions about you. The third thing I learned was to not be afraid of asking questions. In an interview, I was asked to create a solution for directory structure of a computer system. और उसमें मैं एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कैसे मूव करूंगा कि सारी फाइल्स का पाथ अपडेट हो जाए. इन दिस सिनेरियो आई लिसन टू द क्वेश्चन एंड जस्ट डोव डायरेक्टली इनटू द आंसर. उस वक्त मैंने डेटाबेसेस पे इतना काम नहीं किया हुआ था, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में सोच रहा था. गो के मैं एक सॉल्यूशन ले आया जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट व्हाट दे वर रियली लुकिंग वाज फॉर इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस के सेल्फ जॉइंस कैसे काम करते हैं. द सॉल्यूशन वाज सो सिंपल, वेयर आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट नॉट asking clarifying questions. Okay, what do you mean? Where, in what terms do you want me to answer? Thinking out loud is one way to fix this, where if you're going in a wrong direction, the interviewer themselves will help you and guide you into the direction they want you to answer in. लेकिन इसके अलावा भी asking questions is just generally not bad. It's a good thing in an interview especially. In fact, बहुत सारे interviewers आपसे जानबूझ के vague questions पूछेंगे ताकि आप उनसे clarifying questions पूछें. That is also one way to judge you during the interviews. The next point, which has really helped me a lot and is one of the most important points, is to have your questions for the end of the interview. Interview is a two-way communication. जितना कि interviewer आपको जानना चाहता है, you should yourself be more interested in the company itself.
और उसके लिए always have your questions for the end of the interview. It should come out of you that you really want to work there and you are genuinely interested in the company and the work they do. Normally लोग समझते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे खुद पूछेगा कंपनी के बारे में कि what do you know about us, why do you want to work here, why should we hire you. Although ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी पूछ रहा, you should always have your questions. And the way to go about it is to genuinely learn before the interview about the company and the work they do. So go to their website and see what projects are they working on, what technology stacks are they using, what is the culture of the company, and have your questions around them. For example, this is the project I saw on your website. Are you people actively working on this? What is the tech stack are you using? What is the culture of your company? But you should also keep in mind that you should frame your questions according to the interviewer level. अगर कोई executive या कोई HR आपका इंटरव्यू कर रहा है, so you should have your questions for them. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायरेक्टर आपका इंटरव्यू कर रहा है तो आस्क क्वेश्चंस लाइक कोविड में आपने नेविगेट कैसे किया, डिड यू पीपल ले ऑफ, व्हाट इज योर रिमोट वर्किंग पॉलिसी. यू कैन ऑल्सो आस्क वेयर डू यू सी दिस कंपनी इन 5 years, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पर्सन दैट यू हायरिंग फॉर दिस रोल. But to have this question, you have to be willing to spend some time on that company to learn about what they are doing. Which brings us to the fifth point. This is more subjective, but I think it is very important to understand that don't just give interviews for the sake of giving interviews. पहली बात तो कि ये आपके भी टाइम का ज़ाया है, उनके भी टाइम का ज़ाया है और रिसोर्सेज का ज़ाया है. The company puts time and effort and you are just playing with them. Apart from this, जब भी आप किसी इंटरव्यू में एक नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो you are more relaxed and more calm. You are not training your muscle to be working efficiently in a tense environment. While you might think कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने more serious interviews के लिए, लेकिन what you are actually doing is to not train yourself to perform in tensed environments. In addition to that, हर कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रोसेस या बहुत अच्छे इंटरव्यूअर्स नहीं होते. तो while you are thinking कि this will help you practice the interview questions, but it would generally hurt you. इसका दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों के साथ बैठ के मॉक इंटरव्यूज करें and people are genuinely willing to help you. You can find these people on LinkedIn in your social networks. On this note, I'd like to share Discuss.live, a platform which I created for exactly this reason. Discuss is a platform which I created for young and aspiring professionals and entrepreneurs to learn and get mentorship advice from the industry experts. You can search for mentors here according to the skill you are looking the help for and book a session with them on their calendar. Apart from this, you can only get to the interviews if your resume is good. If you want to know some resume tips, you can click here. If you're looking for jobs abroad, especially in Canada, you can click here. And if you like the video, please hit that subscribe button. It would mean a lot to me, and I'll see you in the next one.